Hello friends, myself Sakit Jain, असिस्टेंट प्रोफेसर सेज स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज मैं आपको ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्नाइजेशन के बारे में बताऊंगा। ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्नाइजेशन जो टेक्नोलॉजी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंटेलिजेंट बेस्ड है। इसमें कोई भी अपनी आवाज़ में कुछ बोलता है तो स्पीच रिकग्नाइजेशन उसको डायरेक्टली रिकग्नाइज कर लेता है। अब इस पे हम क्या क्या कंटेंट देखेंगे कि व्हाट इज टास्क, ऑटोमेटिक स्पीच रिकग्नाइजेशन का क्या टास्क है, व्हाट आर द मेन डिफिकल्टीज, इसमें डिफिकल्टीज क्या है, हाउ इज इट अप्रोचेस, इसकी अप्रोचेस क्या है, हाउ गुड इज इट, ये कितना सही है, हाउ मच बेटर कुड इट बी, ये कितना सही है। इसका टास्क क्या है, गेटिंग ए कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड स्पोकन लैंग्वेज by understanding we might be react appropriately convert the input speech into another medium text। मतलब हम इसमें जो भी हम बोलेंगे उसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। several variables impeding on this, how do human do it। अब मतलब अब कैसा होता है कि हम कुछ भी सुनते हैं, अगर ह्यूमन बीइंग और मनुष्य हम कुछ भी सुनते हैं तो हमारी बॉडी उसको मतलब हमारे कान उसको सुनते हैं और सिग्नल्स को ब्रेन तक पहुंचाते, ब्रेन उसको डिटेक्ट करके फिर हमारे माइंड में उस मैसेज को पहुंचाता है, उसको कन्वर्ट करके बताता है कि सामने वाला आपसे क्या बोल रहा है, आप उससे क्या सुन रहे हैं। साउंड वेव्स किस टाइप की आप सॉन्ग सुन रहे हैं, या किसी का हाई स्पीड साउंड सुन रहे हैं, हाई हाई लाउड साउंड सुन रहा है, एक्स वाई जेड, ये सारी चीजें। तो जो भी हम कुछ सुनते हैं तो वो उसके सिग्नल ब्रेन तक जानते हैं, ब्रेन उसको रिकग्नाइज करता है, रिकग्नाइज करके हमें बताता है कि उसका हमें क्या रिएक्शन देना है। हाउ मॉट माइट कंप्यूटर डू इट, कंप्यूटर इसको कैसे करता है, एकॉस्टिक वेव फॉर्म, एकॉस्टिक सिग्नल और स्पीच रिकग्नाइजेशन। तो जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं, जो भी कुछ हम बोलते हैं, हमारे वो हमारी साइन वेव्स होती है, कंटिन्यूस सिग्नल्स होते हैं जिसको हम मतलब सिग्नल्स हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारे एनालॉग और एक डिजिटल। तो हम जो भी बोलते हैं वो एनालॉग सिग्नल होते हैं और इसके बाद वो सिग्नल्स कन्वर्ट होते हैं आपके डिजिटल में, वापस डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होकर फिर हम उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। अब इसमें डिजिटाइजेशन होता है, एकॉस्टिक एनालिसिस ऑफ स्पीच सिग्नल और लिंग्विस्टिक इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीजें होती हैं। व्हाट्स हार्ड अबाउट दैट, डिजिटाइजेशन, डिजिटाइजेशन में क्या होता है, कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, फिर सिग्नल प्रोसेसिंग, separating speech from background noise, phonetics, variability in human speech, phonology, recognition, individual sound distinction, lexicology and syntax, disambiguating homophones or features of continuous speech, syntax and pragmatics, interpreting prosodic features or pragmatics, filtering of performance error। डिजिटाइजेशन, अब डिजिटाइजेशन में क्या होता है, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन के प्रोसेस को हम डिजिटाइजेशन बोलते हैं। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजिंग, यूज फिल्टर्स टू मेजर एनर्जी लेवल्स फॉर वेरियस पॉइंट्स ऑन द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, knowing the relative importance of different frequency band for each piece makes this process more efficient। Example, high frequency sound are less informative so can be sampled using a broader bandwidth। Separating speech from background noise, noise cancelling microphones, two mic, one facing speaker, the other facing way, ambient noise is roughly same for both mics। नॉइज कैंसिलेशन माइक्रोफोन्स, इस प्रोसेस में ये होता है। नोइंग which bits of signal relate to speech, स्पेक्ट्रोग्राफ एनालिसिस। इस स्पेक्ट्रोग्राफ एनालिसिस में हमारी जो बिट्स है वो किस सिग्नल के लिए हमारी स्पीच रिकग्नाइजेशन करती है, उसके लिए। अब वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल्स स्पीच, वेरिएशन अमंग स्पीकर्स ड्यू टू वोकल रेंज, वॉइस क्वालिटी, ग्रोल, विस्पर, physiological elements such as nasality, etc. Accent, especially vowel system, but also consonant, allophones, etc. Variation within speech due to health, emotional state, ambient condition, speech style, formal read versus spontaneous. Speaker independent system. Speaker dependent system require training to teach the system your individual ideas synchronizes. The more the matter, but typically nowadays 5 or 10 minutes is enough.
स्पीच डिपेंडेंट सिस्टम में user asked to pronounce some keywords which allow computers to infer details of the user's accent and voice. Fortunately, language are generally systematic, more robust but less convenient and obviously less portable. Speaker independent system language coverage is reduced to compensate need to be flexible in phoneme identification. Clever compromise is to learn on the fly. I've identified phonemes. Differences between some phonemes are sometimes very small, may be reflected in speech signal. Example, boy will have more or less distinct F1, F2, often show up in correlation effect transition to next sound, allophonic variations. ये फोनेम्स में आपके ये सारी चीजें आती हैं जो अभी मैंने आपको बताया है. फिर डिसएम्बिगुएटिंग होमोफोन्स में mostly differences are recognized by humans by context and need to make sense. Continuous speech, discontinuous speech much easier to recognize. Signal words tends to pronounce more clearly. अगर आप डिसकंटिन्यूस बोलते हैं तो सिग्नल आप उसको मतलब थोड़ा रुक रुक के बोलेंगे तो आपको वर्ड ज्यादा अच्छे से सुनाई देंगे. कंटिन्यूस स्पीच इन्वॉल्व्स contextual correlation effects, weak forms, assimilation, and contractions. Interpreting prosodic features, pitch, length, and loudness are used to indicate stress. All of these are relative on a speaker-by-speaker basis and in relation to context. Pitch and length are phonetics in some languages. अब pitch क्या होती है? Pitch contour can be extracted from speech signal, but pitch differences are relative. One means high, another women's low. Pitch range is variable. Pitch contributes to intonations but has other functions in tone languages. Intonation can convey meaning. अब लेंथ क्या होती है? लेंथ इज इजी टू मेजर बट डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. अगेन length is relative. It is phonetic in many language. Speech rate is not constant. Show down at the end of sentences. Loudness is easy to measure but difficult to interpret. हम उसको अच्छे से सुन तो सकते हैं लेकिन हम इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं ऊंची आवाज को. परफॉर्मेंस एरर. परफॉर्मेंस एरर इंक्लूड नॉन स्पीच साउंड हेजिटेशन, फॉल्स स्टार्ट्स रिपीटेशन. ये एरर में आता है जिसमें हम कुछ सुन नहीं सकते, हेजिटेशन होता है या कुछ फॉल्स है, रिपीटेशन है, ये सारे हमारे एरर्स में आते हैं. फिल्टरिंग implies handling at synthetic level or above. Some disfluences are deliberated and have pragmatic effect. This is not something we can handle in the near future. Approaches to ASR, template matching, knowledge-based or rule-based approach, statistical approach, noisy channel model plus machine learning. Template-based approach, store example of units, words, synonyms, then find the example that most closely fits the input. Abstract feature from speech signal, then it's just a complex similarity matching problem using solutions development for all sorts of application. Okay for discrete alternatives and the signal user. Templates-based approach, how to distinguish very similar templates and quickly degrades when inputs differ from templates, therefore needs techniques to mitigate this degradation. More subtle matching techniques, multiple templates which are replicated. Taken together, these suggested rule-based approach, जिसमें हमारे क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम स्पीच रिकॉग्नाइज करते हैं. Use knowledge of phonetics and linguistics to guide such process. Templates are replaced by rules expressing everything, anything that might help to decode phonetics, phonology, phonotactics, syntax, pragmatics. Rule-based approach. Typical approach is based on blackboard architecture. At each decision point, lay out the possibilities, apply rules to determine which sequences are permitted. Poor performance due to difficulty to express rules, difficulty to make rules interact, difficulty to know how to improve the system. स्टैटिस्टिक्स बेस्ड अप्रोच, जिसमें हमारा क्या होता है कि हम सारे मैथमेटिकल स्टैटिस्टिकल टूल को यूज करके फिर हम टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच को फॉलो करते हुए हम स्पीच रिकग्नाइजेशन करते हैं. अब इसमें क्या होता है कि इसमें कलेक्ट अ लार्ज कॉर्पस ऑफ ट्रांसक्रिप्ट स्पीच recording, train the computer to learn the correspondence, machine learning at runtime reply
Apply statistical process to search through the space of all possible solution and pick the statistical most likely one. अब इसमें मशीन लर्निंग का भी यूज करते हैं हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में. Analyze training data in terms of related feature, learn from large amount of data different possibilities, different phone sequence for a given word, different combination of element of speech signal for a given phone components. Combine these into hidden Markov model expressing the probabilities. Language model, model likelihood of word given previous one. Build the model by calculating bigram or trigram probabilities from text training curves, smoothing issues. The noisy channel model. Source sequence, noisy sequence sentences, decoder, ये set original sentences, ये इसमें बताया गया है. अब इसका क्या यूज होता है नॉइजी चैनल मॉडल का? यूज द acoustic model to give a set of likely phone sequence. Use the lexical language model to judge which of these are likely to result in probable word sequence. The trick is having sophisticated algorithm to judge the statistics, a bit like the rule-based approach, except that it is all learned automatically from data. अब evaluation की बात करते हैं. Funders have been very keen on competitive quantitative evaluation. Subjective evaluation are informative but not cost-effective. For transcription task, word error rate is popular, but task-based dialects, other measures of understanding are needed. Comparing ASR system, हमने इसमें ASR system से इसको compare किया हुआ है. अब इसमें कुछ problems हमारी क्या जाती हैं, like robustness, portability, adaptability, language modeling, confidence measure, out of vocabulary, spontaneous speech, prosody, accent, dialect, and mixed language. Thanks.